हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भलर थिबे। देखंतु आज आमे माने कोन करबा जुडिशियरी रिलेटेड किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसबा। आपण माने जदि चाहउछंती एई परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबा को ता सहित आपण मानकर रिवीजन करबा को ताल डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट मध्य करि परिबे। ठीक अछि, आपण माने कोन करि परिबे ए वीडियो रो पीडीएफ एंड डेली मध्य आपण माने पीडीएफ मध्य पाइ परिबे। ठीक अछि, आपण माने जदि वीडियो रो आपण माने डिस्क्रिप्शन को गले आपण माने क्लिक कले लिंक अछि टेलीग्राम चैनल रो। ठीक अछि, आपण माने टेलीग्राम चैनल रो आपण माने डेली पीडीएफ पाइ परिबे। ठीक अछि, चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन देखिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक अछि, ये देखंतु टू मेक लॉज, बी टू इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी टू एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी टू एग्जीक्यूट लॉज। देखो आमर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरी पावर कहले कौन अटे मन रखिथे आम कॉन्स्टिट्यूशन को से इंटरप्रेट करें। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। मन रखिथे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरी पावर होमर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आमर भारत आमर चीफ जस्टिस को किए अपॉइंटमेंट करथांती। ए देखंतु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डी कॉलेजियम सिस्टम। देखंतु चीफ जस्टिस को मन रखिथे आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे, आमर अपॉइंटमेंट करथांती। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट। देखंतु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस, but this is done based on the recommendation by the collegium system। बट देखो अपॉइंटमेंट करते किए प्रेसिडेंट, बट आंकर जो आम जो रिकमेंडेशन कार था कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे, देखो आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जज हाँपाई हेले, ठीक अच्छे, आज ए जज अपॉइंटेड बा नियुक्त होगापाई हेले तांकर क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक होता है। ठीक अच्छे, ये देखो एटलिस्ट 25 इयर्स ऑफ एज एंड बी ए लॉ ग्रेजुएट विथ एटलिस्ट 10 इयर्स ऑफ ए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, सी ए लॉ ग्रेजुएट with at least 15 years of a practice as an advocate, D must be a retired judge of any high court। मन रखिथे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे, प्रथम तो से जड़े लॉ ग्रेजुएट करेंगे ता सहित आमर 10 वर्ष ठीक अच्छे से एडवोकेट हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक अच्छे, आज ए हाई कोर्ट रे। ठीक अच्छे, यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसीड्योर for the removal of the judge of the Supreme Court is provided under which article of the Indian Constitution। देखो आमर जो जजेस कर जो रिमूवाल प्रोसीजर अटे बा प्रक्रिया अटे आमर सुप्रीम कोर्ट रे। ठीक अच्छे, या क्यों आर्टिकल द्वारा सुप्रीम कोर्ट या प्रोवाइड करें मन रखिथे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट, आर्टिकल 124 मन रखिथे। ठीक अच्छे, यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true अटे about the collegium system for appointing judges। ठीक अच्छे, आमर collegium system संबंधित आमर चारोटी स्टेटमेंट देछि, ए स्टेटमेंट गुडी करू आमर केउटा ट्रू अटे। ठीक अच्छे, ए देखंतु इट इज मेंशनड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी इट इज अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय द जुडिशियरी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, सी इट इज अ मेकानिज्म प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, डी इट इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो आमर जो कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस जजेस को जो अपॉइंट करवा जो कॉलेजियम सिस्टम रो ट्रू होची इट इज मेंशनड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए प्रैक्टिस फॉलोड बाय द जुडिशियरी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। यार सठिक आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। ठीक अच्छे, इट इज ए प्रैक्टिस फॉलोड बाय द जुडिशियरी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मन रखिथे। ठीक अच्छे, आमर इट इज ए प्रैक्टिस अटे फॉलोड बाय द जुडिशियरी विदाउट एनी constitutional backing। Next question, who can remove a judge of the Supreme Court or High Court of from office। आमर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो जजेस अच्छा से किए रिमूव करेंगे। ए देखो द प्रेसिडेंट आफ्टर ए रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड बी द पार्लियामेंट थ्रू ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, सी द प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस, एंड डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मन रखिथे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे, पार्लियामेंट रे
आमर गोटे मोशन बा इम्पिचमेंट आमर जारी होता है जहाँद्वारा आमर सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट जजेस मानक रिमूव करने ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्यों आर्टिकल द्वारा आमर भारतीय संविधान रे आमर जुडिशियल जो रिव्यू या डील्स करता है यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आर्टिकल 13 मन रखिथे आमर जुडिशियल रिव्यू को डील्स करता है ठीक है। आर्टिकल 124 होची हमर कोन हमर जजेस मानकर रिमूवल ठीक है एंड आर्टिकल 32 रीड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल 14 होची हमर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट कैन हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट कैन हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देखो आम संविधान अनुजाई ठीक अच्छे आम सुप्रीम कोर्ट अच्छी मन रखिए आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी ठीक अच्छे आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी ठीक अच्छे आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी मन रखिए आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी से आमर जो मैक्सिमम जजेस ठीक अच्छे आमर सीट केते अच्छी मैक्सिमम मेंबर केते ठीक अच्छे मैक्सिमम मेंबर होची देखो आमर चीफ जस्टिस सहित ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 34 कहीं 33 होचंदी आमर जजेस एंड चीफ जस्टिस होचंदी 1 ठीक अच्छे यहाँ मिसई आमर सुप्रीम कोर्ट रो जजेस संख्या बा स्ट्रेंथ होची मन रखिए मैक्सिमम होची 34 सीट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द हाई कोर्ट आमर हाई कोर्ट रो निम्नलिखित मानक मध्यरु केउंटा गोटे पावर नुही ए देखंतु पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आमर हाई कोर्ट कोन जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड पावर अच्छी यस एंड बी देखो पावर टू इश्यू रीड्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सी देखो पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स डी पावर टू हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स देखो बी हूँ करेक्ट पावर अच्छी से जारी करेंगे रीड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सी देखो इनकरेक्ट अटे कहीं मन रखिए आमर हाईकोर्टर कौन शक्ति अच्छी आमर राज्य मानक मध्य कौन प्रकार समस्या उपजिले या से समाधान करेंगे ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अच्छी ठीक है राज्य में कौन प्रकार असुविधा हुए हाईकोर्ट अच्छी बट डी देखो डी हूँ पावर टू हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स यह हूँ करेक्ट कहीं आम सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी ठीक अच्छे एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एगुड़ी जो आम कोर्ट अच्छी आम मेनली आम हाईकोर्ट द्वारा छोट छोट कोर्टर अपील को हियरिंग करता है ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीजन फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीजन फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखो निम्नलिखित मानक मध्यरु आमर जो सुप्रीम कोर्ट रे आम जजेस जो रिमूवल जो प्रक्रिया होता है आमर क्योंपाई आमे माने ठीक अच्छे आमर सुप्रीम कोर्ट रे जो जजेस वो रिमूव करा क्यों कारण पर ये देखो इनकम्पिटेंसी बी मिसबिहेवियर सी पॉलिटिकल बायस डी ऑल ऑफ दी अबव देखो पॉलिटिकल बायस सेमती किसी ना इनकम्पिटेंसी सेमती किसी ना बट मिसबिहेवियर जदि मिसबिहेवियर ठीक अच्छे कौन प्रकार यदि मिसबिहेव करती ताहले ताको रिमूव करा जाए ठीक अच्छे यही कारण जो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इश्यू रीड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स क्यों प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर भारत संविधान रे क्यों प्रोविजन क्यों व्यवस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट प्रदान करा दे द पावर शक्ति टू इश्यू जारी करेंगे रीड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार यदि कौन प्रकार यदि बाह्यत हुए ताहले आमर भारतीय संविधान रे क्यों गोटे व्यवस्था अच्छी जो व्यवस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करी पारंती आमर क्यों आर्टिकल मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आर्टिकल 32 ठीक अच्छे मन रखिए सुप्रीम कोर्ट हैव ए पावर टू इश्यू एंड रिलेटेड रीड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ठीक अच्छे आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्राइवेसी देखो आमर रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट अटे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्राइवेसी आम जो राइट टू प्राइवेसी अच्छी ठीक अच्छे आमर सुप्रीम कोर्ट रे यह संबंध रे आमर क्यों केस होइतिला ठीक अच्छे ये देखो केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एंड बी नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सी किशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 टी मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978
यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए केस कोटास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड केसेस आर हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म ऑफ द फॉर सॉरी व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमर टर्म पचाची कार हमर सुप्रीम कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट जजेस कर टर्म केते समय होता है ठीक अच्छे मन रखिए गोटे जजेस कर अंटिल द एज ऑफ 65 जेपर्यंत ताकू 65 एज हुई ना से पर्यंत से आमर आमर सीट को होल्ड करि परिबे एज ए जज हिसाब रे बट जेपर्यंत 65 एज कंप्लीट कर गले दे कैन बी रिमूव आल्सो ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन द रिसेंट डिसीजन ऑफ द अयोध्या केस 2019 इन्वॉल्व्ड a verdict related to जो रिसेंट डिसीजन है इन अयोध्या केस इन 2019 इन्वॉल्व्ड verdict related to मन रखिबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राम जन्मभूमि डिस्प्यूट जो होइतिला से संबंध रे हमर हमर जो रिसेंट डिसीजन होइतिला सेति अयोध्या केस को हमर इन्वॉल्व्ड होइतिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची which article of the Indian Constitution allow the High Court to miss issue rates हमर देखंतु हाई कोर्ट मन रखिबे एटा मोस्टली इंपोर्टेंट अटे हाई कोर्ट देइछि ठीक अछि हमर हाई कोर्ट हमर क्यों आर्टिकल द्वारा क्यों अनुच्छेद द्वारा हमर जो रीट अछि ठीक अछि रीट को से जारी करि परिबा मन रखिबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 226 बट मन रखिबे सुप्रीम कोर्ट कैन मन रखिबे सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स रीट इशू ओके थ्रू द आर्टिकल 32 हमर आर्टिकल हमर 32 द्वारा हमर सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबे रेट को जारी करि परिबे ठीक अछि यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिमूवल ऑफ द जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अटे अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट ठीक अच्छे हमर हाई कोर्ट रो जजेस मानकर जो रिमूव होता है चारोटी स्टेटमेंट देई अछि स्टेटमेंट गुडी का मध्यरु हमर केउटा करेक्ट अटे ट्रू अटे ए देखंतु द प्रोसीजर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बी द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हाई कोर्ट जजेस डायरेक्टली सी द ओनली द पार्लियामेंट कैन रिमूव हाई कोर्ट जजेस ए सॉरी डी देखंतु ए हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस अलोन यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर हमर ए होची करेक्ट द प्रोसीजर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट हमर सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मान को जेपरि भाबरे रिमूव करा जाय सेपरि मध्य हमर हाई कोर्ट रो जजेस मान को मध्य रिमूव करा जाय सेम अटे सिमिलर अटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जुडिशियरी व्हाट डज जुडिशियल रिव्यू मीन जुडिशियल रिव्यू कहले कोन अटे ए देखंतु court have the power to examine the constitutionality of laws b court can review and amend laws and c judicial decision can be reviewed by higher court d court can reject law passed by parliament judicial review कहले court can review and amend law ठीक अछि यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए court have the power to examine the constitutionality of law judicial review refers to the power of court to examine whether laws are in accordance with the constitution ठीक अछि हमर जुडिशियल रिव्यू कहले या होटे पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन पावर अछि हमर शक्ति अछि कार कोर्ट रो से को एग्जामिन करि परबा परीक्षा निरीक्षा करि परिबो whether law are in accordance with the constitution next question which recent supreme court verdict uphold the constitutional validity of the article 370 abrogation in Jammu and Kashmir मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट जम्मू एंड कश्मीर केस 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द पावर ऑफ द जुडिशियरी हमर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द पावर ऑफ द जुडिशियरी हमर संवैधानिक जो व्यवस्था नुहे का रिलेटेड हमर जुडिशियरी रिलेटेड ठीक अछि ए देखंतु जुडिशियल रिव्यू बे पावर टू इशू रिट C independent of the judiciary D power to legislate on judicial matter power to legislate on a judicial matter option number D होची correct देखो इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यह गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नुहे क्या रिलेटेड हमर द पावर ऑफ द जुडिशियरी कैन जुडिशियल रिव्यू पावर टू इशू रिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी बट नॉट द लेजिस्लेट ऑन द जुडिशियल मैटर डी होची हमर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन
which recent verdict of the by the Supreme Court emphasized the importance of the right to freedom of speech and expression in the digital age. देखो आमर जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रे केस होता रिगार्डिंग राइट टू आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द डिजिटल एज रे ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर आमर ए होची करेक्ट श्रेया सिंगल केसेस ठीक अच्छे देखो 2015 मसीह आमर या होता स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A एंड IT एक्ट एम्फासाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑनलाइन ठीक अच्छे या थिला हमर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्य आपण माने जदि चाहउछन एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबाकू ता सहित आपण मानकर रिवीजन करबाकू ताल डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करंतु ठीक अछि सेति पई मु आपण मानकर विदाय नेउछि परवर्ती वीडियो रे एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर